Hello, everyone, and a warm welcome to today's session on a very commonly misunderstood topic, जो कि है bipolar disorder versus mood swings. I am Dr. Tanu Kumari. I am an MD psychiatrist at Emoneeds, and with me I have my colleague Zainab, who's a clinical psychologist. आज हम इस वेबिनार में समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे डेली लाइफ में जो आने वाले मूड चेंजेस हैं और जो एक गंभीर बीमारी है जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें क्या फ़र्क होता है. दिस इज़ अ टॉपिक विच मेनी पीपल हैव डाउट्स अबाउट, सो लेट्स क्लैरिफाई इट टुगेदर. ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मूड चेंजेस आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन. वी ऑल हैव अप्स एंड डाउन्स, एंड बट व्हेन डज अ बैड मूड बिकम अ क्लिनिकल कंसर्न, दैट इज़ अ डिफरेंस दैट वील बी एक्सप्लोरिंग टुडे. और अगर हम ये फ़र्क ठीक से नहीं समझते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो हम किसी गंभीर बीमारी को हल्के में ले सकते हैं, या फिर एक मामूली बात को बीमारी समझकर घबरा जाते हैं. तो आज टुडे वी विल लर्न how to recognize, differentiate, respond, and seek help about bipolar disorder or mood swings. So over to my colleague here, Zainab, who will be taking you through the major differences, and then I'll be talking about how to manage them and some more basic differences that are more clinical concern. So over to Zainab. Hello, good afternoon, everyone. I'm Zainab, and I'm a clinical psychologist here at Emoneeds. So let's start with understanding why this topic is important. First part is like mood changes are a part of everyday life. Everyone experiences ups and downs, लेकिन हर mood swing bipolar disorder नहीं होता. इस प्रेजेंटेशन का पर्पस ये समझना है कि कब mood swings नॉर्मल होते हैं और कब वो एक क्लिनिकल कंडीशन बन जाते हैं. सो एंड व्हेन डू दे बिकम अ डिसऑर्डर? जब वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए, लंबी ड्यूरेशन तक चलें, डेली फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करें, किसी क्लियर ट्रिगर के बिना हो, मेनिया या डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हो. And why accurate understanding matters is also very important. Mislabeling normal mood swings as bipolar can lead to unnecessary fear or stigma. अगर bipolar diagnosis मिस हो जाए तो important treatment डिले हो सकता है, जिसका रिस्क सेल्फ हार्म, सब्सटेंस यूज और लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी तक बढ़ सकता है. Proper diagnosis leads to better care, more empathy, more informed support from families and communities. अगर लोग डिफरेंस समझ लेते हैं तो वो अर्ली वार्निंग साइंस पहले पहचान पाते हैं, जल्दी हेल्प लेते हैं और ये समझ पाते हैं कि बाइपोलर एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है, नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ और मूडीनेस. Diagnosing bipolar involves comprehensive clinical judgment and assessment by a mental health professional. The two diagnostic classification systems जो worldwide use होते हैं to diagnose mental health conditions are DSM-5 and ICD-10. Mood swings एक clinical diagnosis नहीं है, बल्कि एक symptom या state या एक descriptive term है जो rapid या intense mood changes को refer करता है. So no mood swing is not a psychiatric condition or a disorder by itself. It's a feature that may appear in various psychological conditions or even in non-clinical populations also. So there are three types of bipolar disorder. Bipolar 1 is characterized by one manic episode and often followed by depressive symptoms. Depressive episodes. Manic episodes बहुत severe होते हैं इस टाइप में. Bipolar 2 is characterized by at least one hypomanic episode और एक major depressive episode. इसमें कोई manic episode नहीं होता. Cyclothymic disorder is characterized by chronic fluctuating moods with numerous periods of hypomanic and severe and depressive symptoms that does not meet the full criteria of either mania या depression. अब naturally आपके मन में सवाल आएगा कि mania क्या होता है, depression क्या होता है. So can we move to the next slide, please? Yeah, so here are some features of mania. Mania diagnose करने के लिए ये symptoms at least एक week तक present होने चाहिए as per ICD-10. So जैसे irritable mood, elevated mood, inflated self-esteem या grandiosity, decreased need for sleep, increased talkativeness, distraction जल्दी हो रहा है, risky behaviors में engage कर रहे हैं जैसे spending और sexual activity. Next slide. हाँ, here are some features of depression. अब डिप्रेशन डायग्नोसिस के लिए भी एटलीस्ट 2 वीक्स ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे कि लो मूड, एनेडोनिया, थकान फील करना, एनर्जेटिक ना फील करना, स्लीप डिस्टर्ब रहे, भूख में चेंजेस हो, वर्थलेस फील करना, गिल्ट फील करना, सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो. दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन.
Next, we will move to the causes of the bipolar disorder. Causes, many times patient ask us कि क्यों होता है, why do some people have depressive and why don't others have the same symptoms, जबकि predisposed they are to the similar stressors. Three main neurotransmitters होते हैं जो, if we talk about biological conditions, जैसे serotonin, dopamine and norepinephrine, जिनका रोल होता है. Genetic factors are also very important. Then if you have bipolar disorder, तो brain changes, brain structure में differences होते हैं. Second, environmental and life experiences also play a major role. जैसे कि फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली अगर बाइपोलर का रिस्क बढ़ा सकती है, बट मेनी पीपल विद जेनेटिक रिस्क नेवर डेवलप कंडीशन. आपके इन्वायरमेंट के फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हेल्थ या स्लीप पैटर्न्स या सब्सटेंस यूज. Research shows that childhood trauma is also a risk factor for bipolar disorder and is associated with more severe symptoms. Childhood में अगर strong emotional distress होती है तो वो बहुत adulthood में emotional regulation को impact कर सकता है. Childhood trauma can include sexual or physical abuse, neglect, traumatic events या extreme living conditions also. So it's important to draw a distinction between bipolar causes and such as genetics and brain chemistry and triggers. They interact to produce mood episodes. Moods episodes कभी कभी specific life events की वजह के बाद हो सकते हैं, जैसे tough breakup, जॉब लॉस या चाइल्ड बर्थ. कुछ हैबिट्स भी इम्पैक्ट करती हैं, जैसे रेगुलर स्लीप ना लेना या अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करना. ये सब मूड एपिसोड्स को ट्रिगर कर सकते हैं या उन्हें और सीवियर बना सकते हैं. And none of this means that you are to blame, though. No one can conclusively say who will and who won't develop bipolar disorder. Its causes lie beyond our control. Next, we'll move to mood swings. Mood swings are sudden changes in how you feel at a particular time. कभी अच्छा फील हो रहा है, कभी अचानक से लो या इरिटेटेड फील करने लगते हैं. कभी कभी आपको क्लियरली पता नहीं होता कि मूड क्यों चेंज हुआ, लेकिन कई बार आपको एग्जैक्ट रीजन समझ नहीं आता. तो research suggests that chemical changes in our brain determine how we feel. So many things can make the levels of these chemicals rise or fall, like missing a meal, taking a walk, or playing with a puppy, getting new periods on, and much more. So ups and downs are a regular part of our life. आप एक मोमेंट ठीक फील कर रहे हो और नेक्स्ट मोमेंट मूड अपलिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल प्लेग्राउंड स्विंग की तरह जैसे. लेकिन जहाँ स्विंग का मूवमेंट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पर कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मूड स्विंग्स इतने प्रेडिक्टेबल नहीं होते. Although sudden changes in our mood can be unsettling, it's important to remember that everyone has mood swings, but if they happen frequently or have negative impact on your life, you should talk to a mental health professional. Changes in next we'll move to the causes of mood swings. The biological causes and medical conditions are one of the few which leads to mood swings. Life changes, life stages, जैसे लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल इन एडोलेसेंस ये डेवलपमेंटल का मेजर कोर्स पीरियड होता है. प्यूबर्टी के टाइम पे जो इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आते हैं उनकी वजह से मूड स्विंग्स कॉमन होते हैं. दे टेंड टू बी मोर लेस सीवियर देन एंड लेस फ्रीक्वेंट एज टीनेजर्स बिकम एडल्ट्स. प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम में अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कैन प्ले अ रोल, जैसे चेंजेस इन हॉर्मोन्स, स्लीपलेस नाइट्स और डेज, lifestyle changes that come with being a parent, and stress of trying to interpret newborn cues and more. Menopause also is a life stage when people experience mood changes. जैसे menopause में extreme estrogen levels होते हैं, that can lead to mood swings also. Medical conditions, बॉडी के कई सिस्टम्स लाइक ब्रेन से लेकर थायराइड तक मूड को इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे ब्रेन कंडीशंस, एल्जाइमर, डिमेंशिया, इसमें भी मूड स्विंग्स ट्रिगर होते हैं. कंडीशंस जैसे ब्लड शुगर जो इम्पैक्ट करते हैं लाइक डायबिटीज, ये भी लिंक किया गया है मूड स्विंग से. माइग्रेन अगर आपको होता है तो यू मे नोटिस कि 24 आवर्स बिफोर दैट यू एक्सपीरियंस मूड स्विंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोड्रोम फेज ऑफ माइग्रेन. ओवर एक्टिव थायराइड, हाइपरथायरॉइडिज्म अगर है आपको तो इट ऑल्सो लीड्स टू मूड स्विंग्स. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, देन स्लीप डिप्रिवेशन, अगर नींद पूरी नहीं हुई है या डिस्टर्ब्ड है तो इमोशंस प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है. ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी अगर के बाद पर्सनालिटी चेंज हो सकती है. ऐसे केसेस में मूड स्विंग्स फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो सकते हैं, जैसे अग्रेशन, डिसइंटरेस्ट या ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड सब्सटेंस एंड मेडिकेशंस. मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे
anxiety, ADHD, bipolar, borderline personality disorder, cyclothymia, eating disorders, PTSD, इन सब में भी mood swings होते हैं, which is also a symptom of these conditions. Substances में many different substances including ingredients in medication also can lead to mood swings. जैसे कुछ medications जैसे bulk control pills, hormone therapy, anabolic steroids, corticosteroids या SSRIs, इनके side effects में mood swings हो सकता है. Substance use जैसे drinking alcohol and using marijuana or tobacco produces changes in your hormones. आपकी sleep disturbed हो सकती है, anxiety हो सकती है, overthinking हो सकती है. So if you quit, you may also experience mood swings. These are some of the causes of mood swings. Next, uh, Tanuma, please continue. सो अभी तक हमने सीखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर के क्या कॉजेज हो सकते हैं और मूड स्विंग्स के क्या कॉजेज हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं बस एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो हमारा नॉर्मल मूड है, जो हमारा नॉर्मल इमोशंस है, वो भी रिएक्टिव होता है हमारी सराउंडिंग से. इट इज़ नॉर्मल टू रिएक्ट टू योर एनवायरमेंट. But jab that reactivity that is enhanced, that threshold to response that is reduced, that is when we tend to experience mood swings. और बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये क्लिनिकली डिस्टिंक्ट एंटिटी है जिसमें distinct episodes होते हैं of very elated mood which will last for months together. There are distinct episodes wherein there is a low mood for months together, that is mania and depression respectively, and it is a very distinct clinical entity. It is a disorder. So mood swings जो है वो अलग खुद से एक disorder नहीं है, it can be a symptom. Let us understand these differences in further detail. तो जो मूड स्विंग्स है, जैसे कि हमने अभी बात की कि मूड स्विंग्स के जो चेंजेस होते हैं इट कैन लास्ट फॉर फ्यू आवर्स इन अ डे. जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है उसके जो एपिसोड्स होते हैं वो एटलीस्ट हाइपोमेनिया में एटलीस्ट 4 दिन के चेंजेस होंगे तब हम लेबल करते हैं हाइपोमेनिया. मेनिया के लिए एटलीस्ट 1 वीक का परसिस्टेंट परवेसिव चेंज होना चाहिए. डिप्रेशन के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स का परसिस्टेंट परवेसिव चेंज होना चाहिए. एंड दिस इज द क्राइटेरिया जब हम लेबल करना शुरू करते हैं. द एपिसोड कैन लास्ट फॉर मंथ्स टुगेदर. सो एग्जाम्पल हो सकता है मूड स्विंग का, जैसे कि यू फेल्ट अपसेट बिकॉज योर बॉस येल्ड एट यू, या फिर आप अपसेट हो गए क्योंकि आपका मदर इन लॉ के साथ कुछ लड़ाई हो गई. यू फेल्ट अपसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दिस कैन बी अ नॉर्मल इमोशन. Suppose you're going through something at that point of time. If there are some traits which make you more prone to mood swings. There are medicines that you may be on, like birth control pills, like we just discussed. There may be some other psychiatric illnesses that you may be undergoing जो अभी तक detect नहीं हुए हैं. At that point of time, this reactivity is reduced. ये increased. तो जो जितना रिस्पॉन्स हम यूजुअली देते हैं उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्स होता है. हर चीज, हर ट्रिवियल स्ट्रेसेस को वी विल एक्सपीरियंस अ मूड स्विंग एंड दिस विल चेंज थ्रू आउट द डे. So, but this is manageable. This severity is usually a mild to moderate severity. जबकि bipolar disorder जो होता है, it is more intense, more severe and more debilitating. जो social occupational dysfunction होता है, that is more severe and it is quite significant in bipolar disorder. जबकि mood swings में we don't see a social occupational dysfunction. हाँ, mood dysregulation जरूर हम experience करते हैं. जो mood swings होते हैं, they are just experienced as normal emotional fluctuations. It is a little difficult to distinguish a normal mood from a mood swing. जबकि bipolar disorder में they are very very clinically distinct entities or episodes. So which the mood changes will last for months together. They are persistent and pervasive in nature. जो बिहेवियर होगा वो भी इन्फ्लुएंस होगा इन, बट इन मूड स्विंग द बिहेवियर विल बी इंक्रीज्ड टू अ लेसर एक्सटेंट. देयर मे बी इरिटेबिलिटी, थोड़ा सा एनर्जी में हम चेंज देख सकते हैं. जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर में यू विल नोटिस दैट जो रिस्की बिहेवियर्स होते हैं, जो इम्पल्सिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना, न्यू बिजनेस प्लान्स में इन्वेस्ट करना, reckless driving करना, all of these behaviors, risk taking sort of behaviors are more in bipolar disorder. The energy levels are very high, the activity levels are very high. जबकि लो मूड्स जो होते हैं उसमें in a bipolar disorder patient will feel very low energy. They will find it difficult to get out of bed. They may even experience suicidal ideas. In a mood swing,
the patient is still able to manage basic tasks even during high moods, even during low moods. जो मूड स्विंग है ये खुद में कोई ये क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, ऑल्दो इट मे बी अ सिम्टम which may be present in some psychiatric disorders, but ये खुद में कोई ये clinical diagnosis नहीं है. Bipolar disorder, on the other hand, it is a specific diagnosis with its own set of criteria, with its own pattern of symptoms, and with its own duration criteria as well. और हम क्या नोटिस कर सकते हैं सिम्टम, जो मूड स्विंग्स होंगे उसके जो बाकी सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली सटल होते हैं या मैनेजेबल होते हैं, जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर के जो चेंजेस होते हैं, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं. इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस टू द पीपल अराउंड अस. So the treatment, mood swings by itself does not warrant any sort of treatment. उसके लिए खुद से आपको कोई medications की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है. Bipolar disorder, it often requires treatment, medication, therapy, as well as lifestyle changes. It will need all modalities of treatment. एग्जाम्पल क्या हो सकता है हाई मूड का, जैसे कि खुश ज़्यादा फील करना, ज़्यादा इरिटेबल फील करना. लो मूड में हम स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं, लो फील कर सकते हैं, जबकि इन बाइपोलर डिसऑर्डर दे विल मैनिफेस्ट एज डिस्टिंक्ट एपिसोड्स ऑफ मीनिया और हाइपोमीनिया एंड डिप्रेशन. इनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि मीडिया में या तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल फील करते हैं या तो बहुत ज़्यादा खुश फील करते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग, देयर कैन बी रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स, देयर कैन बी ओवर फेमिलियरिटी, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की इच्छा होना, ये सब हो सकता है. डिप्रेशन, एज वी ऑल नो, देयर इज़ लो एनर्जी, देयर इज़ लो मूड, जो पहले जिन चीज़ों को हम एंजॉय करते थे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आता है. बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कोर्स कैन बी अफेक्टेड इन बोथ ऑफ दीज entities. But yes, हम ये प्रेजेंटेशन, हम ये जो डिफरेंसेस है इसको समझने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देयर आर सम ओवरलैप. कुछ ओवरलैप डेफिनेटली है दोनों चीज़ों में, दोनों एंटिटीज में. जैसे मूड फ्लक्चुएशंस, मूड फ्लक्चुएट तो दोनों में ही कर रहा है, मूड स्विंग्स पे भी कर रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी कर रहा है. द इंटेंसिटी विल वेरी. चिड़चिड़ापन जो है वो दोनों ही जगह पे हो सकता है. इम्पल्सिविटी, यानी कि बिना कॉन्सिक्वेंसेस का रिगार्ड किए हुए हम कोई एक्शंस ले लेते हैं, दिस कैन बी एसोसिएटेड इन बोथ ऑफ दीज एंटिटीज. Similarly, energy level के changes, this you will find in both of these entities. This can happen. Sleep disturbance because of stress or because of feeling very excited, जो एक simple mood swing के चलते भी आप sleep disturbance notice कर सकते हैं. And similarly, in a manic episode or in a depressive episode, sleep disturbances are very common accompaniment. Concentration, काम पे ध्यान नहीं दे पाना, emotional sensitivity. So these are some overlapping signs and symptoms which should be seen in both the entities. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं via two examples. This will make things very amply clear for you. तो सबसे पहला जो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं in the yellow part of the slide, मूड स्विंग्स का. तो एक 25 साल की महिला हैं जिन्होंने रिपोर्ट करा है कि शी हैज़ फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस थ्रू आउट द डे, और वो ट्रिगर हो जाता है व्हेनेवर शी हैज़ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स विद पीपल और व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेस एट वर्क. कैसे वो फील करती हैं कि सुबह तो शी विल वेक अप cheerful, बट देन शी कैन बिकम tearful when there is a conflict, और शी कैन फील irritable by the evening. ये जो चेंजेस होते हैं दे आर वेरी ब्रीफ, दैट इज व्हाट शी सेज, एंड दे विल रिजॉल्व विद इन आवर्स. And her social occupational dysfunctional, her daily work is not impaired at all. तो mood swings जो है ऐसे present करेगा. You can notice that it is very understandable. It is a very naturally occurring phenomenon. जैसे समझा जा सकता है इसको. It mimics something which is natural. So in response to stressors, there is just an enhanced sensitivity of mood. There is just a lower threshold of responsiveness of mood. The shifts जो होंगे, जो changes होंगे, वो brief होंगे, short lasting होंगे, and बहुत ज़्यादा social occupational dysfunction नहीं cause करेंगे. जबकि on the other hand, अगर हम देखें blue part of the slide, so there is a 30-year-old man जो कि present कर रहे हैं with episodes जब उनका मूड बहुत elevated है, उनकी एनर्जी काफ़ी बढ़ी हुई है, वो बोल रहे हैं उनको सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि हफ्ते से ज़्यादा लास्ट करता है यूजुअली. और उस दौरान वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली स्पेंडिंग भी करते हैं और बहुत ज़्यादा नए नए प्लान्स भी बनाते हैं कि ये बिजनेस करना है, ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड इसके साथ में उनको ऐसे भी पीरियड्स होते हैं व्हेन ही हैज़ डीप डिप्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा लो मूड, साथ में लो एनर्जी,
वो उस टाइम पे किसी से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा अकेले रहना चाहते हैं। और यू विल नोटिस दैट दिस जेंटलमैन also experiences social occupational dysfunction. So these are some key differences कि जो mood shift होगा, एक तो ये ज़्यादा लंबा लास्ट करेगा, दिस इज नॉट वेरी क्लियर कि किस स्ट्रेसर के चलते हुआ है, it is because it is so persistent and pervasive in nature. Many a times it is often not even accompanied with the stressor. Many a times it is that biological in nature. The other thing is that social occupational dysfunction काफी ज्यादा होता है. तो हमने प्रॉब्लम के बारे में तो इतना कुछ समझ लिया अभी तक. वी हैव ओनली बीन डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स की देयर इज मूड स्विंग्स, देयर इज इमोशनल डिसरेगुलेशन, देयर इज बाइपोलर डिसऑर्डर. बट व्हाट इज द सॉल्यूशन, करना क्या है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. So bipolar disorder जो है, since we have just read that it is a more severe sort of a entity, तो उसमें medications will be a very very integral part. Mood stabilizers होते हैं जैसे कि lithium है, valproate है, oxcarbazepine है. These kind of medications are usually given along with some antipsychotics like aripiprazole, olanzapine, etc. And antidepressants are used cautiously in some cases when there is a very severe depression which is not responding. In those cases, we add antidepressants. साथ में हम देते हैं साइकोथेरेपी जो कि सीबीटी हो सकता है. आईपीएसआरटी यानी कि इंटरपर्सनल एंड सोशल रिदम थेरेपी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. इसमें हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस यानी कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको वॉच करना है, एंड अपने सोशल रिदम्स लाइक योर स्लीप वेक साइकिल इन पे वॉच रखना है. So you have to basically keep a watch on how much you're sleeping, how much your energy levels are, and based on that, you have to monitor yourself. साथ में साइको एजुकेशन नॉट ओनली ऑफ द पेशेंट बट ऑल्सो ऑफ द फैमिली मेंबर्स की व्हाट आर दे डीलिंग विद, उसका ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिकवरी, उसके बाद कितने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑफ अ बाइपोलर डिसऑर्डर. जब हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं तो देयर विल बी मोर एम्फोसिस लेड ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, लो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में simple things like including some physical activity in your life, getting your sleep on time, eating your meals on time. These things go a long way in being able to handle your mood swings. साइकोथेरेपी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. अगर मूड स्विंग्स काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो रहे हैं, काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर साइकोथेरेपी लाइक सीबीटी, डीबीटी. साथ में ग्राउंडिंग टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं टू रिड्यूस दी एसोसिएटेड स्ट्रेस और एंजाइटी. तो इन कंक्लूजन हम ये डिराइव कर सकते हैं विद ऑल ऑफ द डिस्कशन दैट वी जस्ट हैड इज दैट मूड स्विंग्स और बाइपोलर डिसऑर्डर डेफिनेटली देयर इज सम सिम्टम ओवरलैप, और इसका जो डिफरेंसेस है उसको समझना जरूरी है ताकि वी कैन सीक हेल्प एट द राइट टाइम, वी कैन करेक्टली अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. ना ही हम सिम्टम को अंडर एस्टिमेट करें, ना ही हम सिम्टम को ओवर एस्टिमेट करें, सेल्फ डायग्नोसिस में नहीं इंडल्ज करें. वी कैन अंडरस्टैंड सिवियरिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड accurate diagnosis is important so that we get the correct help that we need. जो करेक्ट उसका ट्रीटमेंट है, जो करेक्ट उसका मैनेजमेंट है, वो हमें मिल सके सही टाइम पर. So better than indulging in any self-diagnosis, it is always better to seek help of a mental health professional. You can go to a psychiatrist, you can consult a psychologist, and get more clarity on symptoms like this. Because misdiagnosis is a very big roadblock in the way of treatment, and it can lead to inappropriate results as well. So this with this, I think I would like to conclude my presentation. The house is open for questions. If you would like to ask anything, we are here to answer your queries. I think we'll wait for about 4-5 minutes, Zainab.
If anybody has any questions, we are here to answer any doubts that you may be having.